Okay, sir. So in this session we will discuss GSP. तो इस सेशन में हम लोग जीएसपी डिस्कस करेंगे। जीएसपी जीएसपी क्या होता है? जीएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। जीएसपी स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस। जीएसपी से पहले हम लोग ने सबलेट पढ़ा था। सबलेट क्या है? सबलेट हम लोग क्या है, सबलेट में जावा कोड के साथ हम लोग एचटीएमएल कोड लिखते थे। सबलेट क्या है? जावा कोड, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, जावा कोड क्लास बनाते थे, सबलेट बनाते थे, और उसमें अगर एचटीएमएल कोड एम्बेडेड करना है तो जावा कोड के साथ एचटीएमएल कोड को लिखते थे। जावा कोड के साथ एचटीएमएल लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हर टाइम आपको विद इन डबल कोड स्ट्रिंग फॉर्म में आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखना है। इट मेक्स अ डिफिकल्ट। तो जीएसपी इंट्रोड्यूस हुई, जिसको ये क्या करता है, मेक्स अ सिंपलर। अब एचटीएमएल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल कोड के अंदर आप जावा का कोड लिख सकते हो। अगर आपको जावा कोड लिखना है तो एचटीएमएल कोड के अंदर लिख सकते हो। जीएसपी एक तरह से टेम्पलेट की तरह वर्क कर गया है। जैसे हम लोग टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते थे? एचटीएमएल। एचटीएमएल फाइल वी आर यूजिंग फॉर टेम्पलेट व्यू। लेकिन अब हम लोग टेम्पलेट के लिए हम लोग यूज करेंगे जीएसपी फाइल। फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या है? तो जीएसपी जो है वो डायनेमिक टेम्पलेट है। डायनेमिक टेम्पलेट का मतलब, हम जीएसपी टेम्पलेट में स्टैटिक कोड के साथ साथ एचटीएमएल कोड के साथ साथ डायनेमिक जावा कोड भी लिख सकते हैं। जहां आपको डायनेमिक कोड जरूरत है, वहां पे जीएसपी में डायनेमिक कोड भी लिख सकते हो। किसकी हेल्प से? जीएसपी की हेल्प से। इसलिए जीएसपी ज्यादा बेटर हो गई। अब मोस्टली जो कोड हमें अगर सर्वलेट की हेल्प से करते थे, तो सर्वलेट में पूरा का पूरा कोड जावा पे बेस्ड होता था। अब जीएसपी में हम डायनेमिक टेम्पलेट है, मतलब आपको जहां एचटीएमएल कोड लिखना है वहां एचटीएमएल कोड लिखिए, जहां पे डायनेमिक कोड लिखना है वहां पे डायनेमिक कोड भी लिख सकते हो। तो क्या जीएसपी अल्टरनेटिव है या अल्टरनेटिव है सर्वलेट का? नहीं, दिस इज नॉट अल्टरनेटिव फॉर सर्वलेट। सर्वलेट का अपना रोल है। सर्वलेट जब भी हम प्योर अगर प्रोसेसिंग की बात करेंगे, प्योर जहां पे प्रोसेसिंग है, बिजनेस लॉजिक है, हम वो सर्वलेट वहां पे यूज करेंगे। लेकिन जहां पे हमें डायनेमिक टेम्पलेट व्यू, अब जो व्यू रिप्रेजेंट करना है यूजर को, वो व्यू हम लोग अब जनरेट करेंगे किसकी हेल्प से? जीएसपी फाइल की हेल्प से। तो जीएसपी एक डायनेमिक टेम्पलेट है जिसकी हेल्प से हम लोग डायनेमिक व्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से बोले, हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर की बात करें तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का मतलब जो डेटा कंटेन करेगा, दैट इज अ मॉडल। व्यू, व्यू मतलब जो प्रेजेंट करना है एंड यूजर को। तो व्यू जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो जीएसपी की हेल्प से डिजाइन करेंगे। और थर्ड वन इज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर इज द मेन लॉजिक लेयर। अब कंट्रोलर का काम क्या होगा? कंट्रोलर जो मेन जो भी रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को बेसिकली कौन प्रोसेस करेगा, उस रिक्वेस्ट को कॉल दिसेगा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है वो हम डिफाइन करेंगे सर्वलेट की हेल्प से। तो जहां पे व्यू की बात आएगी तो व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जीएसपी का इस्तेमाल करेंगे, जीएसपी यूज करेंगे। चलिए, जीएसपी क्या होती है और जीएसपी कैसे क्रिएट होती है फाइल, चलिए हम लोग जीएसपी एपीआई लाइफ साइकिल समझते हैं। व्हाट इज ए जीएसपी एपीआई लाइफ साइकिल? तो जीएसपी एपीआई लाइफ साइकिल की हेल्प से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पर्पज एंड इवेंट सीक्वेंस ऑफ जीएसपी पेज लाइफ साइकिल। सबसे पहले फेस है ट्रांसलेशन फेस होती है, फिर जीएसपी पेज कंपाइलेशन फेस होती है, फिर लोड द क्लास, क्रिएट द इंस्टेंस, कॉल जीएसपी इनिट मेथड, कॉल अंडरस्कोर जीएसपी सर्विस मेथड, कॉल अंडरस्कोर जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। देखिए, जब आप कोई जीएसपी पेज क्रिएट करते हो तो सबसे पहले उस पे वो जीएसपी एक्चुअली, आप जो भी जीएसपी क्रिएट करोगे, जीएसपी फाइनली कन्वर्ट होती है सर्वलेट में। पूरा का पूरा जीएसपी कोड जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्वलेट जनरेट होता है। जैसे हमने एक पेज क्रिएट किया जीएसपी पेज, जीएसपी पेज जस्ट लाइक एचटीएमएल, जैसे हम लोग एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वैसे हम इंडेक्स डॉट जीएसपी मान लीजिए क्रिएट करें द जीएसपी फाइल, इंडेक्स डॉट जीएसपी।
ये जो इंडेक्स डॉट जीएसपी फाइल आपने क्रिएट की, इस फाइल का पहले कंप्लीट जो भी इंडेक्स फाइल आप जो भी जीएसपी फाइल जनरेट करते हैं, जो भी जीएसपी फाइल क्रिएट करते हैं, उस जीएसपी फाइल के करस्पॉन्डिंग एक सर्वलेट जनरेट होता है। मतलब जीएसपी कोड किसमें ट्रांसलेट होता है? सर्वलेट कोड में। जीएसपी कोड ट्रांसलेट होता है सर्वलेट में, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन पेज। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन पेज। तो जीएसपी कोड कंप्लीट ट्रांसलेशन होता है। जीएसपी कोड का ट्रांसलेशन होता है किसमें? सर्वलेट में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग जीएसपी फाइल इनटू द करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। और सर्वलेट देखिए, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जीएसपी। और सर्वलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। मतलब डॉट जीएसपी फाइल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? डॉट जीएसपी फाइल ट्रांसलेट होती है डॉट जावा फाइल में। We can say .gsp file is converted into .java file after translation. It means for every GSP page, corresponding GSP page, one servlet is generated. So every class must be generated for every GSP page. The process of translating GSP file into corresponding servlet is called translation phase. Who is responsible? This can be done by the GSP container. In Tomcat, we have engine. That is, the engine is known as Jasper engine. Jasper engine is responsible to do this task. तो जीएसपी कंटेनर के अंदर एक जीएसपर इंजन होता है जो कि जीएसपी फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट जावा फाइल में। तो फर्स्ट पेज क्या होती है? जब भी आप कोई जीएसपी पेज आपने बनाया है, जैसे जीएसपी पेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले पेज होती है ट्रांसलेशन पेज। ट्रांसलेशन पेज में क्या होता है? ट्रांसलेशन पेज में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग डॉट जीएसपी फाइल इनटू डॉट जावा फाइल, that process is known as translation process. So we can say, what is a translation process? A translation phase, the process of translating GSP page dot GSP file into corresponding servlet is called translation phase. This can be done by GSP engine. This can be done by GSP container engine. In the Tomcat, this engine is called as a Jasper. So this is the first phase. Once .java file is once .gsp file converted .java file, it means for GSP page, one servlet is generated, then second phase is a compilation phase. Actually, every class which is generated for the GSP must be implemented javax.servlet.gsp page interface. Actually, when you create a servlet, when you have created a servlet, every servlet must be implemented directly and indirectly servlet interface. So this is a GSP page converted into the servlet. When GSP page converted into the servlet, it means that servlet directly or indirectly implements any interface. Yes, you know which interface actually? Because if you created any user defined servlet, every user defined, every servlet directly or indirectly implement the servlet interface. But here remember this point, every class which is generated for the GSP must be implement javax.servlet.gsp.gsp page interface or javax.servlet.gsp http gsp page either directly or indirectly. What meaning of this? Okay, let's understand the hierarchy. Actually, when you created a servlet is a root interface. Yes or no? Servlet is the root interface. Let's understand. Here we design a hierarchy. Okay. Servlet is the root interface. Watch here. Servlet is the root interface. This is a root interface. Now, servlet interface is a child class, is the generic servlet. Yes, no? Generic servlet extends the implement the servlet interface. Now we have generic servlet. Generic servlet. This is a abstract class. Yes, no? Which extend the
which implement the servlet interface. And now its child class HTTP servlet. HTTP servlet. HTTP servlet. Now servlet interface is the root interface. Now this interface is a child class, is a generic servlet, and HTTP servlet is the child class of generic servlet. HTTP servlet. Now servlet interface is a child interface. One is a more child interface. JavaX dot servlet dot GSP page interface. GSP page interface. GSP page is the child interface of servlet interface. It means every class which is generated for GSP must be implemented directly and indirectly GSP page interface. GSP page is the interface which is the child interface of servlet interface. GSP page interface available in which package? javax.servlet.gsp package. Under GSP package, we have GSP page interface. Now, GSP page, one more child interface for GSP page is a HTTP GSP page. HTTP GSP page. So javax available in which package? javax.servlet.gsp, and under GSP we have HTTP GSP page interface. This is the GSP page interface. GSP page is the interface and HTTP GSP is the child interface of GSP page. GSP page in the interface, it is the child interface, servlet interface, and HTTP GSP page is the child interface of GSP page. Now we have one implemented class for this HTTP GSP base class. Okay, let's now we have one more hierarchy. org.apache.jasper.runtime So HTTP GSP base class is the abstract class. Okay, it is the child class of which HTTP GSP page interface. So HTTP GSP base class implement HTTP GSP page interface. So remember this point, every class which is generated for GSP must be implement either GSP page interface or HTTP GSP page interface directly or indirectly. So what here, HTTP GSP base is the implementer of HTTP GSP page in, so it directly and indirectly implements GSP page interface or HTTP GSP page interface. It means every GSP file needs to be converted servlet file. The class, every class which is generated for the GSP must implement which interface? GSP page interface or HTTP GSP page interface directly or indirectly. Tomcat people provide HTTP GSP base for the implementation interface. Now, suppose you have created one file date.gsp. Let's suppose you created one file date.gsp. Now, GSP actually this GSP base needs to be converted. Now, this GSP for this GSP page one servlet file required to be generated. So, what is the file name become? What is the GSP file name? Date.gsp. What is the servlet file name become? Date_gsp
dot java file is generated. So when you create any GSP file, for each GSP file, one class will be generated. That class must be directly or indirectly implement GSP page interface and HTTP GSP page interface. Servlet is the root interface. Now GSP page is the child interface of servlet interface, and HTTP GSP page is also child interface of GSP page. And Tomcat people provide one implemented class named HTTP GSP base. This is our state class. So now we understand GSP page interface. In the servlet interface, just like in servlet, हमने servlet पे पढ़ा था, servlet एक interface है जिसके अपने लाइफ साइकिल सर्वलेट इंटरफेस में 5 मेथड डिफाइन होते हैं, जिनमें कुछ लाइफ साइकिल मेथड होते थे, कुछ नॉन लाइफ साइकिल मेथड होते थे। वैसे अब हम लोग जीएसपी पेज, हमारा इंटरफेस है जीएसपी पेज इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस। नाउ दिस इंटरफेस कंटेन्स टू मेथड। सर्वलेट इंटरफेस हाउ मेनी मेथड कंटेन्स? init method, service method, destroy method, get servlet info, get servlet config. Servlet interface defines 5 methods. Now GSP page is the child interface of servlet interface. This interface actually defines 2 methods, GSP init and GSP destroy. So remember this point. GSP page interface contains 2 methods, GSP init and GSP destroy. There are 2 methods, GSP init and GSP destroy. Okay. What is a GSP init? When GSP init method will be executed? Okay, let's now we remove this diagram and we will try to understand when GSP init method will invoke. Actually, javax.servlet.gsp package. Under this package, we have GSP page interface. GSP page is the interface. Okay. So GSP page is interface. Let's now we discuss it. Yes, this GSP page is interface. This interface defines following method: GSP init, GSP destroy. What is the GSP init? GSP init. This method will be executed only once, just like init method in a servlet. Init method in a servlet executed only one time to perform servlet level initialization activity. So this method will be executed only once to perform initialization activity. So whenever we are sending first request to the GSP, web container always calls init method, which take argument servlet config present in HTTP GSP base class, which in turn calls GSP init method. Actually, when you are sending a request servlet, so servlet internally servlet container call which method? Init method. That is a servlet init method. Servlet init method. Servlet init method. But servlet init method internally call which method? GSP init method. So GSP, watch here. HTTP GSP base is the implementer class. Now here init method will invoke. Now this init method is a final. So you can't override this init method in GSP file. In GSP file, if you want to perform any initialization activity, you need to write that initialization activity under GSP init method. Can we write initialization activity inside init method? We can't write. Why? Because actually GSP page interface implements its servlet interface. So from servlet init method also come into the GSP page interface. But the GSP page interface implementation is HTTP GSP page, which define init method as a final method. So it means you can't override this method, but internally it will call GSP init. So in GSP file, if you want to perform initialization activity, then you can allow to override GSP init method. So you can use GSP init method to perform initialization activity. Okay. So if you want to perform any initialization activity in GSP page,
you can perform initialization activity by overriding the GSP init method. So let's suppose I am creating one date.jsp file. Okay, what's here? We will discuss later on. So this is a GSP tags. Okay. So what here? Under GSP tag, here what we are doing? We are overriding which method? GSP init. And here you can write our initialization. Okay. So GSP init method is used to perform initialization activity. If you want to perform initialization activity in GSP file, then you can use which method? GSP init method you can use to perform initialization activity. तो जीएसपी पेज में अगर कोई भी इंसलाइजेशन करना है, इंसलाइजेशन जैसे सर्वलेट में अगर हम कोई इंसलाइजेशन एक्टिविटी करते थे तो इनिट मेथड को ओवरराइट करते थे, वैसे जीएसपी फाइल में भी अगर कोई भी इंसलाइजेशन एक्टिविटी करनी है तो हम लोग जीएसपी इनिट मेथड को ओवरराइट करते हैं. So this method will be executed what time? This method executed only first time at the time of first request. ऐसे जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड होता है. अब जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड अगर आपको जीएसपी पेज डिस्ट्रॉय होने से, सर्वलेट डिस्ट्रॉय होने से पहले अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम लोग किसके अंदर, किस मेथड के अंदर परफॉर्म करेंगे, किस मेथड को ओवरराइड करेंगे? जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड को. जैसे सर्वलेट में डिस्ट्रॉय मेथड था, at the time of servlet destruction, if you want to perform any activity, that activity you can define under GS, you can define destroy method inside the destroy method. Similarly, अगर आपको जीएसपी पेज में कोई भी एक्टिविटी क्लीन, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सर्वलेट डिस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो जीएसपी पेज में हम कौन सा मेथड ओवरराइड कर सकते हैं? जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड. वाच हियर, डिस्ट्रॉय मेथड अवेलेबल है लेकिन इसको इंटरनली क्या कर दिया गया, इसको मेक कर दिया, फाइनल बना दिया गया. इसका मतलब डिस्ट्रॉय मेथड सर्वलेट वाला यूज आप नहीं कर सकते हो. कोई भी कोड अगर आपको एग्जीक्यूट करना किस टाइम पे? जीएसपी सर्वलेट जब डिस्ट्रॉय होगा उस टाइम पे. अगर जीएसपी फाइल में अगर उस टाइम पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड करेंगे. इंटरनली देखिए डिस्ट्रॉय मेथड ही इन्वोक होता है, कंटेनर डिस्ट्रॉय मेथड ही इन्वोक करेगा, लेकिन इंटरनली वो किसको कॉल करेगा? जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड. तो ये आपका जीएसपी पेज इंटरफेस है जिसके अंदर दो लाइफ साइकिल मेथड, इनिट और डिस्ट्रॉय. जीएसपी इनिट, जीएसपी डिस्ट्रॉय, ये याद रखिएगा. जीएसपी इनिट एंड जीएसपी डिस्ट्रॉय. जीएसपी इनिट, this method will be executed only once to perform initialization activity. Whenever we are sending first request to the GSP, web container always call, web container always, web container हमेशा किस मेथड को कॉल करेगा? init मेथड. लेकिन init मेथड इंटरनली किसको कॉल करेगा? GSP init मेथड को. तो GSP init मेथड आप यूज कर सकते हो जीएसपी पेज पे कोई भी इनिशियलाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. जीएसपी इनिट मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो जीएसपी फाइल में. उसी तरह जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, वेब कंटेनर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करेगा एट द टाइम ऑफ सर्वलेट डिस्ट्रक्शन, बट इंटरनली वेब कंटेनर डिस्ट्रॉय मेथड किसको कॉल कर लेगा? जीएसपी डिस्ट्रॉय. इसलिए जीएसपी पेज में अगर डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड करना है तो आपको कौन सा मेथड ओवरराइड करना होगा? जीएसपी डिस्ट्रॉय मेथड. So this is a life cycle for GSP page interface.